Hey, hi. मैं हूँ अक्षय कुरेकर, a blockchain developer. Welcome to my YouTube channel. This is our chapter 4 of electronic health record blockchain-based system using Hyperledger Fabric. हमने अभी तक देख लिया है installing prerequisites, complete use case, and then downloading our complete Hyperledger Fabric binaries and setting up our test network as well. अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज गाइस देखिए, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे लिंक तो मिल ही जाएगा and or you can click on this complete playlist so you'll get this video sequentially ordered over there. So आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे मोर ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वी कैन कॉल इट एज चेन कोड इन Hyperledger Fabric टर्म. तो हम सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से एक्टर्स है हमारे यूज केस में, किन के लिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस देना है और किन्हें नहीं देना है, और देना भी हो तो किस टाइप का एक्सेस हमें उन्हें देना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कौन रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इन आर इकोसिस्टम. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने कम्युनिटी के साथ में, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर. चलो गेट स्टार्टेड. ओके, सो ये प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप है. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था सेटिंग अप आर fabric samples and running our test network. तो test network run करने के लिए you have to go into the test network repository, a particular folder, and then simply network.sh file को up करना है. तो आपका कंटेनर सारे up हो जाएंगे, and then using docker ps command from CLI itself you can check it, or you can check in your docker desktop. आप docker desktop में भी check कर सकते हैं. और इसको डाउन करने के लिए always make sure that आप जब आप नेटवर्क अप करते हैं तो आपको उसको डाउन भी करना होता है. You have to shut down that network, नहीं तो it will went into the unexpected mode और वो इंटरप्ट हो जाता है. ओके, तो डाउन करने के लिए सिंपल डॉट नेटवर्क डॉट sh फाइल एंड डाउन कमांड, सिंपली वो डाउन हो जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हम अभी हमारे यूज केस को एक बार रिकैप कर लेते हैं. सो वी हैव टू बिल्ड आवर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम यूजिंग ब्लॉकचेन, राइट. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले रहेगा नेटवर्क. सो लेट मी गेट द पॉइंटर. ये हमारा सबसे पहले नेटवर्क है. ओके, नेटवर्क जो हमने इसको भी मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा, बट नेटवर्क अभी किस किस से कनेक्टेड है. हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट कर रहा है एज अ हॉस्पिटल, एज अ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, डॉक्टर्स है, रिसर्चर्स है जो कि हमारे डेटा साइंटिस्ट होंगे, और उनका पूरा फर्म जो हमारे डेटा को एग्रीगेट करके उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. एंड देन इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे पेशेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो उनको क्लेम जो भी होता है, पेशेंट विल गोइंग टू क्लेम द इंश्योरेंस कि भाई ये मुझे अभी इंश्योरेंस प्रोवाइड करो. टू टू वेरीफाई दैट कि जो पेशेंट ने क्लेम किया है वो सही है या नहीं है, वी नीड अ वैलिड डेटा, और वो डेटा कहाँ से आएगा, हमारे नेटवर्क से आएगा, राइट. सो दे कैन कनेक्ट विद द हॉस्पिटल्स और दे कैन चेक देयर हिस्ट्री कि इसने सच में डू वट एवर द क्लेम इज गोइंग टू, जो भी हमारा पेशेंट क्लेम कर रहा है वो सच में वैलिड है कि नहीं है. सो उसके लिए हमारा इंश्योरेंस कंपनी है. देन फार्मा टू मैनेज द कंप्लीट फार्मास्यूटिकल नीड्स, जिसे हमारे अगर कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आ जाए जैसे कोविड जैसे सिचुएशन थी, तो हमें कुछ कुछ मेडिसिन को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे बात, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रेनी सीजन्स में नए नए डिसीजंस आते हैं, तो नए ट्रेंड्स आते हैं, राइट. बहुत सारे ट्रायल्स चलते रहते हैं. सो टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दोज थिंग्स वी हैव अटैच्ड द फार्मा एंड मोर इसके ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल, एंड वी हैव अ डायग्नोस्टिक सेंटर. सो मोटा मोटा सिंपल सी बात यह है कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर के एक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर, पेशेंट्स, फार्मास्यूटिकल सेंटर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिसर्चर्स, इनको हम एक नेटवर्क में लेके आएंगे और इसमें देखेंगे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आपको मैं बहुत जल्दी एक रिकैप कर देता हूँ. हॉस्पिटल क्या कर सकता है, हॉस्पिटल कैन मैनेज द डॉक्टर्स एंड दे कैन गेट ऑल द पेशेंट डिटेल्स. ठीक है, जो जितने भी उनके पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हॉस्पिटल में, दे कैन मैनेज देयर पेशेंट एज वेल. Okay, what doctors can do, doctor can create a record for patient and can upload the prescription for the patient, and then they can update the record of their prescription. Because अभी patient आया तो जैसे this is at day 1 उसका क्या रिपोर्ट था, at day 10 उसका क्या रिपोर्ट है, at day 20 और after 30 days what is the report of that particular patient. ये सारे records हमारे किस में जाएंगे, who is the authentic person to update that record, doctor is the only authentic person, क्योंकि पेशेंट तो कुछ भी कर सकता है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन पेशेंट कि पेशेंट कुछ भी अपडेट कर सकता है, राइट. सो वी हैव गिवन द ऑथेंटिसिटी कि जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डॉक्टर अपलोड करेगा या अपडेट करेगा सिस्टम में. और पेशेंट के पास में कौन सी ओनरशिप होगी, पेशेंट हैज द ओनरशिप टू चेक ऑल दिस प्रिस्क्रिप्शंस,
पूरी हिस्ट्री चेक कर सकता है, वो कब क्या हुआ, एंड वट एवर द रिपोर्ट्स गॉट जनरेटेड इन द सिस्टम, दे कैन व्यू इट, पेशेंट कैन व्यू इट। और रिपोर्ट कहाँ से जनरेट होंगे? हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर विल गोइंग टू अपलोड द रिपोर्ट्स अगेंस्ट दैट पेशेंट बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल। और हाँ, डॉक्टर, डायग्नोस्टिस्ट, ये सारे हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे, सो दे नो ईच अदर। दैट्स द assumption। एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या कर सकती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी कैन गेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट आईडी एंड देन अपडेट द मेडिसिन स्टॉक। दो प्राइमरी टास्क यहाँ पे करेंगे हम। इनका मतलब मोस्टली जो भी की मेडिसिन जैसे मैंने बोला वो अपडेट कर सकता है, एंड गिव द प्रिस्क्रिप्शन or get this prescription from the DB and just hand it over to the patient जो भी उनको मेडिसिन दे। That's pretty understandable। Now, researchers can collect the data. Now, they can collect the data at multiple levels. They can collect the data of hospitals, किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं, किस टाइप के डिसीजेज जनरेट हो रही है, व्हाट आर द challenges doctor are facing, what are the different patient different type of, or what are the common diseases floating in the market, something like that. What are the challenges they are facing in the pharma side, what are the challenges they are facing in the diagnostic center side। ऑल दिस टाइप ऑफ डेटा गॉट कलेक्टेड एट वन प्लेस, और उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है हमारा डेटा साइंटिस्ट। और जितने भी नए नए डिसीज आ रहे हैं या ऑलरेडी काफी कॉमन डिसीजेस के ऊपर नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों का रिसर्च कौन कर सकता है? हमारे इस पे। तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि डेटा साइंटिस्ट इज अ वेल सेटअप फर्म, और ये खुद का हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी हो सकता है, या कोई प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, या स्टेट एंटिटी हो सकती है, या ग्लोबल लेवल पे हो सकती है। ओके, तो इनका काम है सिंपल सा कि रिसर्च करना और वैलिड रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। तो रिसर्च करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा लगता है, तो वो डेटा हमारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और पेशेंट से कलेक्ट कर रहा है। इन एक्सचेंज ऑफ दैट, रिसर्चर्स की कम्युनिटी इनको क्या करेंगे? रिवॉर्ड्स देंगे, कि दे विल स्पेंड सम टोकन ऑन देम, कि उनके लिए कुछ ग्रांट्स अप्रूव करेंगे, फॉर हॉस्पिटल्स ग्रांट्स, फॉर डॉक्टर्स सम प्रोविजंस दे विल गिव, एंड फॉर पेशेंट डिस्काउंट्स ऑन द कंसल्टेंसी फी, और डिस्काउंट एट द लेबोरेटरी, जैसे लेबोरेटरी सेंटर में, या जहाँ पे वो मेडिसिन सेंटर पे। These are the examples I'm giving, or they can give money directly as well। So it's up to the ecosystem कि हम किस तरह से उसको डिजाइन करना। In our use case, we are providing the rewards, okay, in terms of tokens। Now, insurance company can verify the patient details, and whatever the claims raised by the patient, they can approve it। जैसे उनका क्लेम अप्रूव होता है, क्लेम दे विल अप्रूव, उनके मनी जो भी है वो सेटलमेंट हो जाएगा, that got get settled in the patient's account or in the patient wallet। Now let's try to understand the network part little bit। So network part में हमारा सबसे important, this is little now technical concept। We have our network. Network is connected with your IPFS, interplanetary file system, where we gonna update our all the media files। जैसे हमारा एक्सरे हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, ब्लड रिपोर्ट हो गया, जिसके अंदर वैलिड डेटा होता है, ठीक है, पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस, जो भी हमें डेटा अपडेट करना है वो हम आईपीएफएस में करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा टेक्सचुअल फॉर्म डेटा होगा, विच इज सिंगल एंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट वी गोना अपडेट इन आवर लेजर। कूल। Now we have here one more component called Node SDK backend। Node SDK backend क्या करता है? हमारा हमें एक Node SDKs बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल APIs लिखेंगे, which will going to interact with my network, and network is going to interact with my smart contract। ठीक है? So this is, or smart contract will come under the network part, and this is our DB to manage the application level stuff, whatever the business logic we have to write, and then manage the user login, hospital data, and all those things we're gonna manage with respect to our database। And we will be having here one web application to consume our complete platform। तो जो भी हमारे पोर्टल्स के लॉगिन होंगे वो यहाँ पे हमारे वेब एप्लीकेशन होंगे, एंड देन पेशेंट विल ओन दिस मोबाइल ऐप। तो पेशेंट कैन सिंपली use the mobile app and consume whatever they are in the network। So this is more on the network side। So network में हमारा क्या होगा? It's like a private network, right? So we have here orderer concepts, orderer services to manage the consensus mechanism, and here we have one channel. Inside that channel, we will be having the organization. This is org one and org two. Org two, each organization will have their own peer zero, peer zero. In as of now, this is what we going to have in our network, which is going which we are going to set it up। So here we will be having org 1, org 2 with one peer each, one peer each, and they will have their smart contract। जो अभी हम smart contract लिखेंगे, we have to deploy that smart contract explicitly on both the organization,
वी हैव टू टेक द अप्रूवल एंड जिससे हमारी चीजें ऑटोमेट हो सके. नाउ व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन? Organization is a high level entity in the complete blockchain ecosystem, which is going to manage the infra for the smart contract and uh, for, in short, they are the responsible for running the network. Now there are multiple things to consider when we are talking about organization. यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, बोथ टेक्निकल एंड ऑपरेशनल. टेक्निकली आपको ऑर्गेनाइजेशन किसे बनाना चाहिए? जो भी मल्टी पार्टीज होती है, हमें सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्ट्रेच करूंगा, ब्लॉकचेन की यूज करते हैं. हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू कनेक्ट विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर एंड टू फॉर्म अ कंसेंसस मैकेनिज्म. ठीक है, सो टू क्रिएट अ ट्रस्टलेस इकोसिस्टम. So now we have hospital is a complete different entity. We have insurance, which is a complete different entity. We have a government altogether, which is a complete different entity, which is going to analyze the complete ecosystem. Ki all they will uh, they will play a part in the governance mechanism. कि make sure करेंगे कि जो भी policies सही से apply हो रही है नहीं हो रही है. Are they breaching any data privacy and consensus part of the patient and all those things. So these all are the different entities altogether. They can play a role as an organization. Okay, so this is a very high level definition of organization. Who can play a role of organization and who can play a role of the peer. Peer is someone a part in the organization, or we can call it as a, it's a technical part or technical component where we are going to deploy our smart contracts. So if you need multiple versions of smart contracts to deploy it on different level, जितना ज्यादा आपको सेग्रीगेशन करना होगा कि लेट्स से दिस ब्लॉक ऑफ पीपल विल गोइंग टू परफॉर्म दिस टास्क, दिस block of people is going to perform this task, but this two block is a part of one big block. So this one big block will act as organization, this small block will act as a peer, this small block as a act as a peer one and two. और इनके रोल्स को हम डिफाइन करेंगे कि peer वन कुछ अलग टास्क परफॉर्म करे, peer टू कुछ अलग टास्क परफॉर्म करे, वो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के रखेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिजाइन आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. Okay, and this is just a block explorer to track all the blockchain activities over here. Cool. So I think this is what we have with respect to the PPT. Now let's move towards our smart contract stuff. So where exactly we gonna write it, right? तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? सिंपल सी बात है. एज ऑफ नाउ यू हैव द fabric samples. So inside fabric samples, if you open any asset transfer basic one, so here we can see application gateways and then chain code. Chain code is external chain code, Go, Java, JavaScript. So these are the different languages they support to write the chain code. We are using JavaScript because I know JavaScript, I know Go, but most of our audience know the JavaScript. So that's why we are going to use the JavaScript code. So asset transfer, this is asset transfer.js. This is nothing but the chain uh, code. The main logic is written in this particular file. So we need to rewrite this file or we need to create a similar sort of file for our use case. Okay. So you can go through this particular, please go through to this file. They have the multiple functions over here. Asset transfer. Asset transfer is the function name, sorry, class name, which is nothing but the smart contract or chain code name as well. So you can see the create asset is here, read asset is here, update asset, delete asset, right? X assets exits or not, whatever asset is exit, they're gonna check based on the ID. Transfer asset is here. So here are all different functions which we required. So what we're gonna do, we're gonna create a similar function, similar smart contract over here. So we can create here one new file called electronic health record EHR chain code dot js, chain code dot js. Okay, EHR chain code dot js. So inside this very first, before simply jumping into the writing chain code logic, we need to understand different actors in our ecosystem. We have patients. Hey, hi. So writing smart contracts or chain code, we're gonna see in the next video. See you there. Jai Hind.